କିଛି ଲାଗିଯାଏ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆପଣ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୁଏ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ କରିଦେବି କିଛି ଦେଖାଯିବନି। अच्छा ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଚଳିବ। Hello students, very good morning to all of you. I am Shravani Swagatika of Ramadevi Women's Higher Secondary School. Welcome you all to the YouTube live class in chemistry. We have started our solid state and this is our third class. What we have discussed in our last class? Last class we have discussed about the unit cells, the types of unit cells, then the crystal lattice and Bravais lattice. Look at this structure. A structure टी को देखो. This is the structure of a crystalline solid. And what about this spheres? Sphere गुड़ा को कौन represent करती? ना they represent the constituent particles. They may be atoms, ions or molecules. How they are arranged? They are very closely packed. They are packed very closely. They touch each other. से माने परस्पर को touch करूचंदी ना नहीं? Yes, they touch each other. This type of structure is known as the space filling model of a crystal. This is a closed structure in which the particles are represented by spheres and they touch each other. Then I want to show a video so that you will be clear about the crystal structure and about the space filling model. Okay, look at this structure. So this is a space filling model of a crystal. How the particles are arranged? The particles are arranged closely packed. This is the which structure? This is the open structure. Look at this, they are arranged in layers, layers, layer. Look at this, it is converted into our crystal structure, the space lattice, in which the same spheres are represented by the points. So this is the lattice structure or the open structure. And look at the small portions. से small portion को कौन कहा जाउथिला? These small portions are called as a small portion को कौन कहा जाउथिला? These are called as the unit cells. Okay, let us move on to the next part. Dear students, the lattice structure. In the lattice structure, what happens? In lattice structures, they are represented by the points. In lattice structures, they are represented by the points. So, mu kon kahili in unit cells. In unit cell, जोटारे के हमें एटा हला हमारा space filling model or closed structure. This is the crystal lattice structure or the open structure, in which the same spherical particles are represented by the points. So एठी देखो एटा गोटे which type of unit cell? Last class I have discussed about the type of unit cell. These are the different types of unit cell. को प्रकार crystal system एटा हमें last class पढ़िचे. There are 7 types of crystal system. Say 7 types of crystal system रू which crystal system is it? It is a cubic system, isn't it? So एटा होची हमर गोटे cubic system. So cubic system रे देखो तीन प्रकार. There are 3 types of unit cells. मु कहथिली Bravais lattice. In cubic system it has 3 types of variations. What are they? One is your simple cubic, next one is your body centered cubic, and the next one is your face centered cubic. In simple cubic, look at this, these are the corner points. These are the corner points. So how many corner points are there? There are 8 corner points of a cube. So no other position. Out of position ne tamara particles achi ki? No, only they are present at the 8 corners of the cube. So this type of unit cell is our simple cubic. This is our simple cubic unit cell. Come to the next category. Here what happens? Here the corner points are there. These are the corner points 1 2 3 4 5 6
7 and 8. 8 corner points are there. In addition to the corner points, there is a particle present at the center. A unit cell ro center e particle ta अछि na nahi. So ए प्रकार unit cell को कौन कहा जाउथिला? This type of unit cell is known as body centered cubic. एठी देखो एठी से ए उडा को रिप्रेजेंट हेछि बाय स्पेस फिलिंग मॉडल. ए मॉडल ले कोन हेछि? एठी कोन हेछि? They are represented by the points, but here they are represented by spheres. So these spheres they touch each other. So in addition to एरा सब corner point. आको जदि मु join करबी, if I join this, then I will obtain a cube. देखो गोटे क्यूब स्ट्रक्चर पाइली आ सब क्यूब रो कॉर्नर रे there are presence of particles. ए गुडा का particles that may be atoms, ions or molecules. So in addition to the corner points, एठी देखो गोटे blue color रो particle रहिछि. That particle represent the body centered particle. This unit cell is known as what? This is known as the body centered cubic unit cell. So this is the second type of cubic crystal system. Then come to the third one. This is your, এটা দেখি কি কইলো which type of unit cell is it? It is a face centered cubic. এইটা भी गोटे cubic system होना नहीं. So join the centers. So here there are 8 particles at the 8 corners. In addition to the 8 corner lattice points, there are presence of particles. A blue color रा spheres मानकु देखो. They are present at the center of the 6 face. कहिछि क्यूब रा केतरा फेस थाए? A cube has 6 faces. So देखो 6 टा फेस. Upper face, lower face, left face, right face, front face and back face. So there are 6 faces and the particles are present at the center of each face. So this type of unit cell is known as what? This is known as face centered cubic lattice. The our question hoji, our aim is to study about the number of atoms for a unit cell. एठी जो atoms उडा को रहुछि मु तुमको कहिथिली ए atom, suppose I want to show this is a unit cell. Here there are 8 atoms. Look at this atom. Suppose ये atom टाको मु consider कली. So a atom रो सबु part, all the parts of this atom does not belong to unit cell. This unit cell आरो सबु पार्टा ए यूनिट सेल को बिलोंग करिवो नाही, because there are so many unit cells like this in 3 dimension. एठी गोटे यूनिट सेल अछि, एपटे अछि, एपटे अछि, एपटे अछि, तार ऊपर भी अछि. ता माने एटा जदी ग्राउंड फ्लोर रे आर फर्स्ट फ्लोर रे भी सेमती 4टा यूनिट सेल अछंती. लोअर लेयर रे 4टा, अपर लेयर रे 4टा. एमथि है कि टोटल देयर आर 8 यूनिट सेल्स सराउंडिंग दिस पॉइंट. This point is surrounded by 8 unit cells, isn't it? Similarly, जदि face centered atom भी रहुछि, that is also surrounded by so many unit cells. We will now study about the contribution of a lattice point towards a unit cell. गोटे unit cell को गोटे lattice point रो केते contribution सेटा आमे वर्तमान study करिबा. Let us move. So first we will move to our first crystal system. Look at this. First we will study about our corner lattice point. Corner position रे अछि particles कहिछि 8टा corner. So we will now study the contribution of a corner point towards a unit cell. मु जहा बे बुझेली. Look at this. Suppose here मु तुमको देखौछि. Look at this. So this is number 1. एटा गोटे unit cell. एटा this one is a unit cell. गोटे unit cell पाइलो. से unit cell एपटे unit cell अछि, एपटे अछि, एपटे अछि, तळे भी 4टा unit cell अछि. से unit cell ए unit cell टा को देखो. ए जो पछपटे जो unit cell टा अछि एटा. So एटा को देखि दियो. So this is the unit cell. Okay, so say unit cell 8टा corner भितरु ए गोटे corner. This is one of the 8 corners of this unit cell. So look at this. This corner point is shared by how many unit cells?
ए कॉर्नर पॉइंट केतेटा यूनिट सेल द्वारा शेयर होची लुक एट दिस सो दिस इज द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस यूनिट सेल ए जो नंबर 1 यूनिट सेल हैला तारो एटा गोटे कॉर्नर हो ना नहीं देन तार जो राइट साइड रे रहला एपट जो यूनिट सेलटा रहला तार भी सेटा कॉर्नर पॉइंट ये भी कहि परिबो कि मो कॉर्नर पॉइंट एटा तापरे ताको आगे रे आर आगे रे गोटे यूनिट सेल अछि फ्रंट रे सो तार भी सेटा कॉर्नर पॉइंट ए जो नंबर 2 रहला तार इन फ्रंट ऑफ द नंबर 2 यूनिट सेल देयर इज आल्सो ए यूनिट सेल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 सिमिलरली एटा जदी ग्राउंड फ्लोर हैला तम बिल्डिंग रे जेमति ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थाए एटा जदी फर्स्ट फ्लोर हैला फर्स्ट फ्लोर रे चारिटा रहिला यूनिट सेल सेमति तार लोअर लेयर रे हैला ग्राउंड फ्लोर रे सेमति चारिटा अछंती सो से मानकर भी कॉमन कॉर्नर पॉइंट दिस वन सो वन कॉर्नर पॉइंट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स गोटे कॉर्नर पॉइंट 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर हुए so each will have a contribution of देखो फॉर एग्जांपल दिस इज ए पिज्जा एटा होची गोटे पिज्जा ओके इट विल बी शेयर्ड बाय 8 बॉयज 8टा बॉय ताको खाइबे so each will have a share of 1 2 3 4 5 6 7 8 if it is divided among 8 boys then each will have a share of जनक भाग को केते पड़बो ऑब्वियसली 1/8 एटा सब गुडा को 1/8 1/8 1/8 हो ना नहीं से ये तो इठी हेची सो ईच विल हैव ए शेयर ऑफ 1/8 सो जदि तुमको क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर लैटिस पॉइंट टुवर्ड्स ए यूनिट सेल तुम कौन कहबो द कंट्रीब्यूशन इज 1/8 okay let us move on to another lattice point रे मुने इची गोटे कोन गोटे पॉइंट कॉर्नर शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल एटा तो हम देखिले एज सेंटर यूनिट सेल गोटे एज सेंटर लैटिस पॉइंट यूनिट सेल नो एज सेंटर लैटिस पॉइंट सो एज रो सेंटर रे भी पार्टिकल्स रही पारे मुझे कहितली लैटिस पॉइंट्स मे बी कॉर्नर पॉइंट मे बी फेस पॉइंट मे बी बॉडी सेंटर्ड पॉइंट किंतु ता बाद in addition to that the particles can also be present at the center of edge जदि गोटे आयोनिक क्रिस्टल रहुची आयोनिक क्रिस्टल कोन रहउची कैटायंस रहउची पॉजिटिव आयन एनायंस रहउची नेगेटिव आयन जदि नेगेटिव आयन्स रा को कॉर्नर पॉइंट्स रे रहिला तार करेस्पोंडिंग आयन दैट इज द पॉजिटिव आयन मे बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एज ताकू ही कुआ जाए एज सेंटर लैटिस पॉइंट बुझियला एज सेंटर लैटिस पॉइंट कोन मु तुमको कौन कही लास्ट क्लास रे ना एज सेंटर गोटे क्यूब रो केतेटा एज थाए एज माने धार केतेटा थाए ए क्यूब हैज 12 एजेस 12टा एज थाए जेमति ऊपर 4 4 8 1 2 3 4 प्लस 4 इक्वल टू 12 देयर आर 12 एजेस गोटे क्यूब रो देखो तागर गोटे एज रे जदी गोटे लैटिस पॉइंट रे गोटे पार्टिकल रहिला गोटे एज नेली ए नंबर 1 यूनिट सेल एटा हला गोटे यूनिट सेल तार ए एज रे रहिला कोन गोटे स्फीयर बा गोटे पार्टिकल सो नाउ इट विल बी शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स मो क्वेश्चन होचे सेया सो देखो ए जो एज सेंटर्ड पॉइंट ता रहिला दैट इज द एज कॉमन एज ऑफ हाउ मेनी यूनिट सेल सेई धारटा कॉमन टू 4 यूनिट सेल्स एटा हला नंबर 1 एटा नंबर 2 number 3 and number 4 that means 4 unit cells have the common edge and tari center a particle ta rahichi so that means an edge centered lattice point is shared by how many unit cells it is shared by 4 unit cells a figure dekhe ke imagine karo solid state is all about imagination and visualization if your visualizing power is strong then you can imagine jodi tume imagine kari parilo then you can represent it in your answer sheet okay so imagine like this it is shared by 4 unit cell so the bhag ko kete padla jodi gote pizza ko 4 jona khaile bhag ko padila 1/4 each will has a share of 1/4 share to lekha hechi एज सेंटर लैटिस पॉइंट रो कंट्रीब्यूशन हला केते एज सेंटर लैटिस पॉइंट हैज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट 1/4 सो नेक्स्ट
come to another lattice point. आउ गोटे lattice point कौन है पारे आमे corner point पढ़िले edge center point पढ़िले एबे पढ़िबा face center point. जदि face रो center रे गोटे lattice point रहुची इबे particle is present at the center of a face ताको कौन कह दउथिला face center cubic FCC जोटा में first रू देखे छी. So this is a particle present at the center of a face. मु ए यूनिट सेल टा नेली देखो तार केतेटा फेस अछि गोटे यूनिट सेल रो चारोटी फेस थाए ए यूनिट सेल हैज 6 फेसेस. सो तार गोटे फेस रो सेंटर रे आई हैव रिप्रेजेंटेड अ पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस. सो ताहले दिस पार्टिकल विल बी शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स इटा कहा केतेटा यूनिट सेल द्वारा शेयर हबो ना आंसर इज 2. नंबर 1 यूनिट सेल और नंबर 2 यूनिट सेल्स. ओके एटा जदी इमेजिन न कर पाछो इमेजिन द रूम इन व्हिच यू आर सिटिंग जो रूम रे तुमे बसिचो सेही रूम को इमेजिन करो. दिस इज द रूम एंड दिस इज द वॉल ऑफ दिस रूम. एटा ला ए रूम रो वॉल बा कांथ. सपोज ए पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस वॉल. एठी मु गोटे विंडो रखिली. ओके वॉल सेंटर गोटे विंडो रखिली आ ए रूम रो पछपटे behind this room there is also the presence of similar type of room. That means this wall is shared by two rooms. Say जो common wall বা common window is shared by how many rooms? 2 rooms. So say I लिखा है a point present on the center of a face is shared by 2 unit cells. So the contribution of each face center lattice point will be equal to 1 by 2. So you have to remember this. So you have to remember the contribution of a face center point. Okay dear students. So then move on to our next part in which we will discuss about the types of the contribution of each type of the number of atoms present in a क्रिस्टल. तो तमे वर्तमान जानिलो केते प्रकार लैटिस पॉइंट अछि आउ सेमानकर कंट्रीब्यूशन सब कोन कोन जेमति कि कॉर्नर पॉइंट रो कंट्रीब्यूशन आसिला 1/8 बॉडी सेंटर रो आसिला केते बॉडी सेंटर जो एज सेंटर रो आसिला केते 1/4 फेस सेंटर रो आसिला केते 1/2. सो तो दिस इज इट इज रिप्रेजेंटेड. So it is represented by means of the table. हैला ए टेबल टा को मु जहा कहली तुमको I have represented by means of this table. You can remember this. The corner रो contribution केते, edge रो contribution केते, face center रो contribution केते. Okay. So I have left this one. This is a body centered unit cell. हैला एटा रे भी देखनियो गोटे यूनिट सेल रो सेंटर ऑफ द बॉडी. से यूनिट सेल रो सेंटर रे जदी गोटे पार्टिकल थाए बा गोटे स्फीयर थाए लाइक दिस द कंट्रीब्यूशन केते हबो. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? दैट पार्टिकल इज शेयर्ड बाय दैट यूनिट सेल ओनली. हो ना नहीं? नो अदर यूनिट सेल हैज एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस. आउ कोनोसी यूनिट सेल कोटा बिलोंग करूची कि नो इट कंप्लीटली बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉडी सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू 1. So ebe table ta ko mone rakhiniyo. It will be helpful for calculation of the number of atoms per unit cell. Question asithibo calculate the effective number of atoms present for a simple cubic unit cell. So to my question jodi ase what you have to write. This is represented by the symbol Z. First simple cubic unit cells कथा देखिबा. आमे simple cubic रे देखि देइचे there are 8 corner atoms. So each corner atom has a contribution of 1/8. Say I लिखी जी each corner point has a contribution of 1/8. तो जदी total there are 8 corner atoms. Then तो भाग को जदी 1/8 पढ़िला there are 8 students. So 8 जण केते खाइबे 8 into 1/8. So that is equal to 1. So it is the contribution of each point and it is the number of atoms. So total becomes 8. Remember this one. Okay. So next one. So next we have to
calculate it for, so we have to, so I want to show this by a video so that it will be clear for you. So how to calculate, this is the simple cubic unit cell. देखो 8टा कॉर्नर रे अछंती पार्टिकल्स गुडा को, सो ताको हमें कट कर देले भाग एडा ला यूनिट सेल को कंट्रीब्यूशन आसी गला केते 1/8. सो टोटल केतेटा थिले 8टा, सो 8 into 1/8 करके हमें बाहर करले केते 8 into 1/8 दैट इज इक्वल टू 1. एटा हमें कहा पे करले ना, एटा हमें करले सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. Similarly, we will calculate it for the body centered unit cell. So देखो body centered unit cell रे मु कहि थिली body center रे जदी गोटे पार्टिकल रहला तार कंट्रीब्यूशन सब बेले 1. सो तारे कॉर्नर पॉइंट रे अछि, कॉर्नर रे भी अछि पार्टिकल्स. सो कॉर्नर रे कंट्रीब्यूशन टा को एठी लिखा जाय छि 8 into 1/8. This is for body centered atom. So 8 into 1/8 that is equal to 1 plus 1 equal to 2. So in body centered atom each will have a contribution of what? Each will have a contribution of 1 by equal to 2. 1. This is a body centered unit cell. देखो unit cell रो body रो center रे atom टा अछि, ताको हमें कट कर देले per unit cell केते आसिला देखो 1/8. एटा सब कॉर्नर पॉइंट रो कंट्रीब्यूशन आसी गला 1/8 आ ए जो मझिरे रहिला सेटा तो केवल सेही बॉडी सेंटर रो, सो तार कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1. तो केते हबो कॉर्नर एटम पे कि हमर बाहरी पड़ी गला 8 into 1/8 इक्वल टू 1. आ बॉडी सेंटर जो रहिला बॉडी सेंटर पे कि तार कंट्रीब्यूशन हैला 1. सो टोटल z नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 2. So now you are clear about the number of atoms present in the unit cell. We have discussed about simple cubic and body centered cubic unit cell, isn't it? Then what is the next category? The next category of unit cell is our face centered unit cell. In face centered unit cell what happens? There are 6 particles present at the center of each face in addition to 8 corner point. एटी corner point उडा लिखाई छी 8. each corner point रो contribution लिखाई छी 1/8. so this is for corner atoms. And what about this? This is the contribution of face centered atom. So जेहेतु 6 टा face अछि 6 into 1/2. So it हला 1 plus 3 that is equal to 4. So for face centered atom the contribution becomes 4. Similarly हमें ताको कट करके देखिबा कि there are 4 particles inside a unit cell. That means these 4 particles completely belongs to a face centered cubic unit cell. So you have to remember this table. This is 1, this is 2 and this is 4. So एटा remember करले ही it will be helpful to you for solving the problems related to density. Okay, so this is a problem गुडा एमती आसीबो related to this portion. देखिनियो a compound formed by elements A and B has a cubic structure. Let us draw a cubic structure. A compound is formed by theta elements. कौन A और B. So A are present at the corners. कितना corner अच्छी? 8 corners. The 8 corners are occupied by the atoms A. Okay. Then B atoms are at the face center. B atoms गुडा कोठी अच्छी? They are present at the face center. सबु फेस रो सेंटर रे गोटे गोटे बी एटम्स को बसई दियो. जेहेतु 6 टा फेस सेंटर अछि 6 बी एटम्स. हमको कोन बाहर करार अछि? डिराइव द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड. केमिति बाहर करबा? इफ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ ए एटम्स and the number of B atoms, then we will get our formula. एबे कैलकुलेट करबा number of A atoms. Number of A atoms केमिति बाहरिबो? एटम्स गुडा कोठी अछि? A atoms. They are present at the corner position. So there are 8 A atoms. Each atom has a contribution of 1/8. So it will become 1. तो A atom रू केतेटा अछि per unit cell? A is equal to 1. सेमती बाहर करो number of B atoms. B atoms केतेटा अछि बाहर करबा?
ना बे एटम्स रा कोठी अछि फेस सेंटर रे अछि सो तो केतेटा फेस सेंटर एटम अछि 6 each has a contribution of 1/2 so it will become 3 so the ratio of A is to B A और B रो रेशियो केते हबो 1:3 so A रो 1 पार्ट हेले B रो 3 पार्ट्स this is the formula of the compound हमें पाई गले एबे formula हमें पाई गले so this is the formula so what you have to write down you have to write down you have to write down as A atoms are present at the corner points then you have to okay so A atoms are present at 8 corners so number of A atoms bahar kari delo number of A atoms पाई गलो तमरो केते ना 1 देखो 1 आसी गला B atoms are present at the 6 faces therefore number of B atoms बाहर कर देला 6 into 1/2 so तांको रेशियो टा काढी देला देखो A is to B equal to 1:3 formula आसी गला AB3 so मुझे एमते डिराइव करी छी you have to derive the problem like this so that you will get the full answer so एटा टिके सिंपल प्रॉब्लम थिला टिके कॉम्प्लिकेटेड आलो को जाउची you will solve it at your home just मु क्लू दे दोची एटा देखि नियो a crystal arrangement X atoms are placed at the corners and Y atoms are present at the body center so X atom तमे केमती बाहर करि नबो they are present at the corner means X atom तमे पाई गला केते 1 Y atoms are present at the body center तो body center रा contribution सब बेले केते 1 so formula केते आसीबो formula will be XY if the answer is XY it is correct so एटारे भी देखिनियो एटा टिके ट्रिकी टिके try to solve in a crystal arrangement A atoms are placed at the corners A atoms रा को corner रे अछि so number of A atoms तुमे पाई गला केते 8 into 1/8 that is equal to 1 and B atoms are placed at two alternative faces of the cube माने 6टा जो फेस अछि any two alternative face रे रहि चंदी को एटम ना B एटम हैला तो एटार टिके स्ट्रक्चर तुमको बुझवा को पड़िबो सपोज दिस इज अ क्यूब it has 6 faces any two faces let us consider this face and its alternative face माने opposing face the face which don't touch each other से माने टच करबेनी टॉप बॉटम नियो लेफ्ट राइट नियो किबा फ्रंट और बैक नियो तो तार सेंटर रे को एटम रहि छी B एटम सो एटा उटे फेस सेंटर एटम हेला ना नाही सो नंबर ऑफ B एटम्स हमें बाहर करबा each face center atom has a contribution of 1/2 जेहेतु दीटा अछि face center atom आमे एठी 2 मल्टीप्लाई करबा सेठी हमें 6 मल्टीप्लाई करथिले कारण 6टा फेस रो सेंटर रे थिला एठी केवल दीटा फेस रो सेंटर रे अछि so answer will be 1 so A रो पार्ट B रो पार्ट पाई गलो the formula will be AB this is the answer so 8 at the little bit difficult to this so if you are able to solve the above problem then you can definitely solve it look at this A atoms are placed at the corner so A atom रा किसी problem नहीं हमें पाई गले 1 B atom कथा देखो एटा टिया भल से पढ़ो B atom is missing from one of the face center points हैला face center केतेटा points अछि 6टा one atom is missing 6टा रो जदी गोटे atom missing हैला total केतेटा face center atom रहिला 6 minus 1 पड़ेला रहिला 5 so the number of B atoms ताले केते आसीबो आमे एठी केते मल्टीप्लाई करबा 5 into 1/2 हैला 6 टारु गोटे पळेची रहिची 5टा so it will become 5 into 1/2 that is equal to 5/2 तो A पाई गलो केते 1 A पाई गलो 1 B पाई गलो 5/2 तो रेशियो केते आसीबो A is to B will be equal to 1 is to 5/2 that is equal to केते 2:5 हबो ना नहीं सो तमे आमे ताले तो आंसर कहां पाइले फॉर्मूला इज A to B5 so the answer will be A to B5 okay now you are clear okay this is all about this portion if you go through the syllabus the number of atoms for a unit cell portion is over let us move on to the next portion this is what this is a crystal structure एक structure मु तुम बारंबार देखै छी what do you see here
the atoms now we will call it as particles. They may be atoms, ions or molecules. How they are arranged? They are arranged in layers. सब layer है कि arrange होइछंती and all the particles touch each other. ये जो color है ची they represent two dissimilar particles, two different types of particles. So ये गोटे प्रकार particle, ये है ला second type of particles. But all the particles try to touch each other. सब बड़े से माने पैक है कि रहिबा को चेष्टा करंती and that is the property of a solid. So let us move on to our next portion, closed packed structure. What do you mean by closed packed structure? समस्ते packing माने कौन बुझुछो? Let us move to a fruit market. This is a fruit market. This is a apple shop. गोटे apple दुकान को जिबा. How the apples are arranged? How they are arranged? They are packed very closely. They try to pack very closely. से माने सब बड़े पैक होबा को ट्राई करंती. देखो so pack layer है कि पैक है चंदी. The dimension is 3 dimension. They are packed in 3 dimension. Similarly, in our solid, the constituent particles also try to pack closely. जहाँ को हमें कहा जाए कौन? Closed packed structure. This is a closed packed structure of a solid. So ये जो ball, मैं तुमको कही ची constituent particles are represented by means of sphere. Their structure is considered to be spherical. So they have spherical shape. They may be atoms, ions or molecules. So these are the constituent particles. देखो particle they try to pack each other. से माने परस्पर को pack करूँचंदी ना नहीं. So this type of structure is known as closed packed structure. So now you understand what is closed packed structure. Then write down what is closed packing. This is the definition of closed packing. This is the packing of similar type of constituent particles. Similar type माने जदि cations माने pack हो जंदी they will pack. Okay, मु dissimilar कथा कहिनी, anion कथा कहिनी. This is the packing of similar type of constituent particles inside a lattice. सब बड़े particles माने चाहती they try to occupy maximum amount of available space. Space रो maximum space को occupy करने को सब बड़े particles माने चाहती. So that they occupy maximum available space in the lattice. आउ यही प्रकार packing को कहा जाए कौन? Close packing. The close packing can be in 3 dimension. 3टा dimension रे close packing of particles है पारे in solids. हैला? That is in 1 dimension. It may be in 2 dimension. It may be in 3 dimension. So in space, how we are moving in space? आमे गोटे space रे केमती move करू? We can move in x axis. We can move in y axis. Or we can move in z axis. So आम पाए 3टा axis available. Same thing जो particles गुड़ाक पैक होचंदी they can be packed in 1 dimension गोटे axis रे हेई पारंदी. They can be packed in 2 dimension दीटा axis रे हेई पारंदी x y x z एमती हेई पारंदी. No हले they can be packed in 3 dimension x y z axis रे. But actually in crystalline solids the particles are packed in 3 dimension. So in 3 dimension रे हमको study करियर अछि. This is important among all. Most of the questions will come from 3-dimensional close packing of crystal. But a 3-dimensional close packing को बुझिबा को हेले we have to study the 2-dimensional close packing. How to study the 2-dimensional close packing? We have to study the 1-dimensional close packing. So 1-dimensional close packing जदि हमें बुझी पाइबा सेटा रिपीट है कि हमको 2-dimensional close packing दबो सेटा सक्सेसिवली रिपीट है कि हमको दबो कोन 3-dimensional close packing हैला. सेथि पाई we have to discuss a parameter about the close packing. What is that parameter? से parameter टा कोन? That is our coordination number. A coordination number एकु तमे coordination chemistry रे भी पढिछ. तार डेफिनेशन अलगा हे पारे बट तार gist is same. माने एटा कोन? It is the number of nearest particle which a particle touches. ता माने कोन? गोटे particle अछि. Suppose this is a particle. आउ तार सराउंडिंग रे
so many particles are there तार सराउंडिंग बा तार नेबरहुड रे बहुत गुड़िए पार्टिकल्स अछंती देख ये सब बहुत गुड़िए पार्टिकल्स आमर रही दे आर कंसीडर्ड टू बी स्पेरिकल इन शेप मु को पार्टिकलटा चूज कली ना ए पार्टिकलटा चूज कली ए पार्टिकलटा को देख पर्टिकुलरली दिस पार्टिकल विल टचेस हाउ मेनी पार्टिकल ए पार्टिकलटा केतेटा पार्टिकल को टच करिवो देखो नेबर रे तो बहुत गुड़े पार्टिकल अछंती ता सराउंडिंग रे ये केवल टच करछि काहा को 1 2 3 4 5 and 6 it doesn't touch these particles so a particular coordination number ताहले केते the coordination number of this particular particle is 6 so coordination number एमती बाहर करा जाय this is very important देखो एटा गोटे बॉडी सेंटर क्यूबिक करिछि तो एटा गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ता किंतु एथे कोन होछि all the particles will touch space filling model actually all the particles will touch with each other okay so consider this point a purple color particle को choose करो look at this point so this particle will touch how many particles it will touch 8 particles what are they these 4 particles in the upper layer and 5 6 7 8 so जदि पचरा जाए what is the coordination number of this particle so you have to answer the coordination number is 8 so you are clear about coordination number आमे coordination number काहे की पढुचे because it is very important for close packing coordination number ता जेते बढ़िबो close packing रो closeness ता सेते बढ़िबो so that's why you should understand what is close packing and this is the definition of what coordination number you can write down if it comes as a 1 mark question so आगड़ कथा देखो in ionic solids रे कोन थाए the constituent particles are ions cations आउ anions हे पारे जेमति कि सोडियम क्लोराइड रे कोन अछि constituent particles are sodium ions and chloride ions so तुमको पचरा हला what is the coordination of sodium ions तमने तमे कोन बाहर करबो the number of chloride ions surrounding this sodium ion is the coordination number of sodium ion so actually in NaCl crystal 6 chloride ions surround 1 sodium ion so the sodium ion coordination number 6 similarly the coordination number of chloride ion is 6 that means that is also surrounded by 6 cations so say to लिखा है जे point रे so move on to the next greater the coordination number the more closely packed is the crystalline solid tamane coordination number is directly proportional to the closeness in close packing ro closeness that is directly proportional on the coordination number that means coordination number jete adhika habo they will be closer to each other which will be closer the particles in the crystal will be closer to each other जदि closer होंदी ताले कोन होबो सेई जो crystal ता that will become more rigid the solid will become more rigid more dense तार density will be more so this coordination is important in this regard so it may be आर value ता हे पारे 4 हे पारे 6 हे पारे 8 हे पारे नल it may be 12 in different cases so come to close packing in one dimension मु कहितली close packing one dimension बुझले भी हमें 2 dimension और 3 dimension बुझबा come to the first one it is a close packing in one dimension में कौन हुए देखो these are the constituent particles they are repeated in one axis एटा मु x axis नै छी suppose this is the x axis you can also take the particles in y axis or you may take in z axis जो axis भी तुम नियो you will obtain the arrangement like this similar type of arrangement is found out in whichever axis you take so here what we will find coordination number केते हबो कहला already I have explained the coordination number in one dimensional close packing is how much look at this consider any of the particles आंको भीतर जे कोन से पार्टिकल को कंसीडर करो देखो how many particles it will touch with how many particles it will touch with 2 particles one particle from left
one particle from right. So in one dimensional close packing, the coordination number is always 2. So bujila one dimensional close packing. Move on to the close packing in 2 dimension. एबे गोटे एक्सिस नौथिला एबे हमर नबा दीटा एक्सिस एक्स वाई नियो कि एक्स जेड नियो. यू हैव टू कंसीडर 2 एक्सिस. तो सेतरे गोटे रो रे अरेंजमेंट होथिला. सो वन डायमेंशनल पैकिंग रे सेंति गोटे रो रे दे आर अरेंज्ड इन वन रो. एबे वी विल अरेंज देम इन अनदर एक्सिस. सो आम पाखरे आसीगला दी प्रकार पॉसिबिलिटी आसीगला आम पाखरे 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर. Possibility number 1 होची they can be arranged like this. से माने एमती अरेंज हे परंती एटम ओवर एटम. देखो सबु एटम रो ऊपर गोटे गोटे एटम मु प्लेस करजी. आ गोटे हैला पॉसिबिलिटी नंबर 2 इन व्हिच आई कैन अरेंज द सेकंड. सब टच करचंदी बिले. सो दे कैन देखो एडा सब हैला तांकर कोन डिप्रेशन. दीज आर द डिप्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, the first row. तो मु नेक्स्ट पॉसिबिलिटी रे कोन करबी आई विल अरेंज द सेकंड रो इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, देन द थर्ड रो इन द डिप्रेशन ऑफ द सेकंड रो एंड द फोर्थ रो इन द डिप्रेशन ऑफ द थर्ड रो. हला यू कैन राइट एट योर होम आल्सो. सो दिस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी. सो दिस इज पॉसिबिलिटी 1, दिस इज पॉसिबिलिटी 2. So we will, depending upon these 2 possibilities, there may be 2 types of close packing. कौन possibility number 1, it is a 2-dimensional square close packing. जदि possibility 1 हैला हमें कौन पाइबा 2-dimensional square close packing. Okay, so you have to write down 2-dimensional square close packing. 2D. Another possibility is there. Another possibility रे कौन होबो in 2-dimensional close packing. So we have represented the possibility 1. This is the possibility 2. Possibility 2 रे हमें कौन पाइले ना hexagonal close packing. You can represent it by 2D HCP. You have to write down 2D. कारण in 3D also you will get square close packing and hexagonal close packing. So that's why you have to write either it is 2D or it is 3D. So you are discussing about the close packing in 2 dimension. So square close packing in 2 dimension. जहाँ तुमको देखे थी in possibility 1, that is represented by this figure. Okay, देखो it here. देखो ये डाला first row, ये डाला हमारा 1 dimensional close packing. आमे एबे ताकू y axis रे अरेंज करबा. देखो सेकेंड रो को मुझे तळे प्लेस कली. I place exactly the atoms over the atoms. Atom ऊपर atom रखिली, atom ऊपर atom. Third row भी जो रखिली, that is also placed over the second row of atom. So possibility 1 रे कौन पाइथिली ना square close packing. काहे कि ताको square close packing कुआ होथिला. Look at this. So coordination number हमें बाहर करबा. Consider this particle. This particle will touch how many particles? It will touch these 4 particles. 1, 2, 3 and 4. So coordination number becomes 4. Okay. Join the center of these 4 particles. Particles मान को center को join करो. Which shape you obtain? को प्रकार shape पाउचो. This is the shape of a square. Okay. So this is, that's why it is named as square close packing. जदि A layer टा A हुए, this is repeated successively, same alignment रे repeat ହେଇची again and again. So this layer will be A, this will also be A. So type of packing को हमें कौन कहबा ना A type. So if the question comes what is 2-dimensional square close packing, then you have to write down the type of packing is A type. There is same alignment of successive layers and the atoms, same alignment means atoms are placed over atoms and voids are placed over void. I will explain what do you mean by void. Void माने कौन? It is the empty space. The particles माने जितने closely pack हेले भी some empty space are left between the particles and the empty space left between the particle is known as void. Okay, so packing efficiency is 52.48%.
So next class we will discuss what is packing efficiency. I am just telling you that packing efficiency is the amount of space occupied by a particle. गोटे पार्टिकल केते स्पेस गोटे पार्टिकल ऑक्युपाई करूची सेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय इज पैकिंग एफिशिएंसी. कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुमको बुझेली दैट इज 4 एंड द void is square void. The void is square. एट देखिनियो टिके एटा हला हमर void. से void रो शेप कोन? void रो शेप हला कोन? स्क्वायर. सेथि पई कि कुआई छी the type of void is square. Move on to the hexagonal close packing. The possibility 2 टा कहिथिली सेथरे कोन कहिथिली एथरे देखो गोटे रो रो डिप्रेशन ने सेकंड रो अछि. एटा हला हमर वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. तार सब डिप्रेशन उडा देखिनियो एटा हला तार डिप्रेशन. सेही डिप्रेशन उडा करे हमर सेकंड रो टा एटा हला सेकंड रो प्लेस करा हिच. सो एठी यदि फर्स्ट रो इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, सेकंड रो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए. हबना नाही, अलाइनमेंट डिफरेंट हो जाउची. Here the atoms are placed over void. तेणु करिकी it is represented by the symbol B. So come to the third layer. Third layer कौन हबो? ए जो first layer, exactly the third layer is similar to the first layer. If you join the center, then it will become straight line. First, third or fifth layers are exactly similar. So you can write here A, then B, then A. So type of packing is AB टाइप हैला. तो एठी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बाहर करबा. जेठी से जेमति से बाहर करथिले स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे गोटे पार्टिकल को कंसीडर करिनियो. सो सेठी इट विल टच हाउ मेनी पार्टिकल्स देखिनियो. इट विल टच 1 2 3 4 5 and 6 particles. So कोऑर्डिनेशन नंबर हे गेला 6. Join the centers. The shape is a hexagon, that's why it is called as hexagonal close packing. Look at the voids. देखो एउडा सब voids उडा को ए void माने को shape कोन? The triangular void. Triangle भला देखा होची. But there are two types of triangle. दी प्रकार triangle देखो. ये गोटे प्रकार triangle, ये गोटे प्रकार triangle. So apex pointing, एडाला apex. This is pointing upward. This here the apex is pointing downward. Okay, so this is your hexagonal close packing in 2 dimension. So write down this. The packing efficiency एठी कोन हे गला? The packing efficiency is increased little bit. सेठी 52.4 थिला, एठी more amount of space is occupied by the particles. कारण सेठी कोन थिला? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थिला, एठी कोऑर्डिनेशन नंबर कोन हैला? इंक्रीज हैला. Greater the coordination number, greater is the packing efficiency. So efficiency बढ़ी गला. हम कहि छी type of void is triangular. So solve this problem. In a BCC unit cell, an atom at the body center is shared by how many atoms? Body center atom ta सब बड़े it is shared by only one unit cell. Okay. So this type of multiple choice question can come from this class. In a simple cubic crystal, the coordination number of each atom is how much? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल गोटे कर सेतेरे गोटे से पचाची व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पॉइंट. ये गोटे कॉर्नर पॉइंट नेली. इट विल टच हाउ मेनी पॉइंट्स? इला नंबर 1 नंबर 2 एटा हला हमर नंबर 3. सेमती एपडे अछि नंबर 4, ऊपरे अछि नंबर 5, तळे एपडे अछि नंबर 6. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच पॉइंट इन ए सिंपल क्यूबिक system is 6. 6 atoms surround this. In BCC, the coordination number of each atom is how much? BCC रे हमें coordination number एटा धरा अछि center रे. आकु सराउंड करके केतेटा atoms अछंती? 8टा. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So the answer will be 8. In FCC, the coordination number of each atom will be 12. It will be discussed in the next class, in which we will study the HCP. So these are the 3 types of unit cells. So तांकर सब आमे कैलकुलेट करिचे. The number of atoms simple cubic रो केते थिला 1, body center cubic रो 2 और face center cubic रो थिला 4. तांकर रेशियो टा तो पचरची. So it will be 1:2:4. So this is all about your today's class. So next class we will discuss about the packing in 3 dimension. Okay, thank you.